sir. Sir, I'm Riya. So my question is how to overcome the state of hesitation and gain back the lost confidence. वंडरफुल क्वेश्चन. मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा हिंदुस्तान लैक ऑफ हेसिटेशन के कारण अपना पूरा पोटेंशियल नहीं यूज कर पाता. उसका एक रीजन तो ये है, कल्चरल रीजन. वी कम फ्रॉम due to the conditioning that when the country before the freedom happened, that everything you're not supposed to ask questions. We are a society which gives a huge emphasis on conformity. कि टीचर्स बेस्ट स्टूडेंट उस बच्चे को कहते हैं जो कोई क्वेश्चन ना पूछे. तो ये सोसाइटी से हम आते हैं, तो इस करके हेसिटेशन हमारे इनग्रेन्ड है. एंड फॉर अस टू अचीव सक्सेस इन लाइफ वी हैव टू रिमूव हेसिटेशन. सो योर क्वेश्चन इज टू पार्ट. नंबर वन, द क्वेश्चन इज हाउ टू रिमूव overcome state of hesitation in life, and the second one is how to gain back the lost confidence. So let me ask you, thank you, you may take a seat please. Let me ask you, and you will have you ever felt confident in your life? Let's say if I get a camera in which a certain function is not working, never worked, I will say it needs to go back to the supplier because this function never worked properly. But in this case you're saying I felt confident at time and now I don't feel that anymore. My answer to you is going to be very, very simple. You have to identify what things brought you into that state of confidence. Right? What were the contributory factors? And how can I bring them back into my life again? Removing hesitation is a state of mind. There are certain days when you come to school when you feel all energetic. और आपको अच्छा महसूस होता है, you're happy, you talk to so many people. There are certain days आपको होता है आज मेरे दिन कोई भी बात ना करे. Right? You, the individual, is the same. You haven't changed. Diya is same human being, right? What has changed? The state of mind. So my answer is this: the altering of the state of mind changes our behavior. So we have to identify what are the things which make me feel better. How do I feel empowered? This is all an internal process. How do I work on myself to get back into that state? The second thing I will recommend to is take small steps. Take small challenges once again. कई बार क्या होता है, एक छोटी सी गलती होती है और उसका नेगेटिव आउटकम आ जाता है. लेट्स से आप में से किसी ने फंक्शन में पार्टिसिपेट किया और कुछ बोलना था. हुआ किसी के साथ ऐसा है कि आपने कुछ बोलना था स्टेज पे जाके और एकदम से फ्रीज हो गए, भूल गए क्या बोलना था. Has that happened? Yes. या आपने कुछ गलत बोला है, लोग हंसे, मजाक बना, इतना मजाक बना कि निकनेम डल गया उसके ऊपर, बाकी बच्चों ने छेड़ना शुरू कर दिया, हो गया. बट यार यू मस्ट लर्न टू डिटैच फ्रॉम दैट इंसिडेंट. कोई एक हैपनिंग आपको डिफाइन नहीं करती है. ह्यूमन बॉडी के सेल्स रीजनरेट होते हैं, यू नो दिस. हमारे नेल्स कुछ वीक्स के बाद दे आर ब्रांड न्यू. आवर हेयर दे शेड एंड दे आर ब्रांड न्यू. स्किन के सेल उतर के स्किन नहीं आ जाती इंसान के ऊपर. प्रोसेस इतनी स्लो होती है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, वी आर नॉट एबल टू सी इट. आवर बॉडी इज रीजनरेटिंग इटसेल्फ. व्हाई नॉट द माइंड? माइंड पे हम क्यों इम्प्रिंट लेके उसी को व्हाई डू वी कंटिन्यू डिफाइनिंग अवरसेल्व्स विद दैट इंसिडेंट दैट हैपेंड 2 years ago? So all you have to, meditation is a powerful tool. Sit in meditation. And for me meditation is nothing but just closing your eyes and focusing on your breathing. और एक कोई भी empowering sentence ले लो. Whatever religion you are from, whatever God you worship, कोई एक empowering sentence, one sentence can change your life. Let me hear it. One sentence can change your life. Find that one sentence and repeat it 10 times in your mind, and then allow that to be a part of your subconscious process. And take small challenges once again. फिर से volunteer करो, फिर से पंगा लो. किस चीज से आपको उस समय एक bad experience हुआ, वो हार नहीं माननी है. Failure is only when you quit, when you stop trying. Until you're trying, you are a WIP. You know what a WIP is? Work in progress. A WIP is a work in progress. And don't be ashamed to be a WIP. So what? Who was born perfect? कल परसों एक मैसेज आया हमें कि सर I want to speak like you. I said I was not born with a mic in my hand which said hello, here I am to the nurses, let me give you a motivational talk. Nobody's born perfect. Problem ये है, ज्यादातर लोग जब हमें नजर आते हैं उस लेवल पर पहुंच चुके होते हैं already. By the time they become famous. Now I just told you today, 11 years ago we sent the first email to MGN, which means 12 years I've been a motivational speaker. So somebody will see me now and say, wow, you're a naturally gifted speaker. Look at all this. Come to my office. I will show you. We are falling short of space to store my notes.
don't see the background work. We see the outcome. वो कहते हैं ये बंदा talented है यार, naturally gifted है, जो ये कर सकता है मैं तो कभी भी नहीं कर सकता. We don't see the process, the hard work, the sacrifices. Once अब process को देख लोगे, पता क्या होने वाला है? You will have a aha moment. यार ये कर सकता है, फिर मैं भी कर सकता. And let me say it here. I was an introvert, shy kid in school. Not one of those who would easily go up on stage. My first time I ever went on stage was I was in grade 8th or something. And that too, my legs were shaking. So it's not like this is my personality type. No. If you understand the process behind becoming something, you identify that process and you continue walking on that road, your results cannot stay away from it. Hesitation is just fear. What is hesitation? It is fear. Fear of all the negative outcomes happening in your mind. If I ask one of you to come here right now and talk about something, the first thoughts that are going to cross your mind are all negative. I'm gonna fall, I'm gonna trip, everybody's gonna laugh, मुझे right words नहीं आएंगे mind में, all negative. Yes or no? ये चीज याद रखिए, by default mind will think negative. If you will leave this machine, this most powerful machine in the world, if you will not control it, what is going to happen? It will go towards the negative. Let's say you see these tiles on the roof. Everybody look at the tiles on the roof. In camera as well, we can have a shot of the tiles on the roof. There's like maybe 200 of them. And every single square has a tile. Yes? Let's say one of the tiles would be missing. And when we look up at the roof, what is the first thing we will see? पहली चीज कौन सी आएगी हमारे ध्यान में? मिसिंग टाइल. अच्छा, मिसिंग टाइल. फिर हम क्या करते हैं? जर्नलाइजेशन करते हैं. क्या करते हैं? जर्नलाइजेशन. ये देश का यही हाल है. What connection one missing tile has with the rest of the country? We journalize. एक आइसोलेटेड इंसिडेंट लेके उसको जर्नलाइज कर दिया. फिर क्या होगा? फिर आपके साथ एक दूसरा बंदा आ जाएगा आपके जैसा. हाँ, मैंने भी पता है यही देश का हाल है, इसलिए मैं कनाडा जा रहा हूं. फिर वो क्या हो जाएगा? ग्रुप इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा. यस और नो? अच्छा, ये ग्रुप बड़ा खतरनाक है. दिया क्यों खतरनाक है? इन सबकी सोच एक जैसी है और ये किसी और ओपिनियन को अंदर आने नहीं देंगे. इनमें जाके बोलोगे यार देखो इंडिया इज गोइंग टू बिकम अ सुपर पावर. सड़क मैं तेरे को खड्डे दिखाऊं सड़क के. ये देख तेरे को नजर आ रहा है. ही विल कन्विंस यू. थोड़े टाइम में आप सोचोगे यार मैं ही गलत हूं, ये सही है. यू गेट द पॉइंट? सो किस ग्रुप में हो आप? Hesitation is fear, so you have to have the courage to believe in your own convictions, in your own thoughts. Have that conviction to believe in yourself, and then step forward and be comfortable with mistakes. हमारा culture गलतियां encourage नहीं करता है. Sorry to say this. I'm in a school. मैं कई बार स्कूलों में जाके ऐसी बातें कह देता हूं जाके, फिर मुझे बुलाते ही नहीं कभी भी. पर मैं भी ठीक था. एक बार तो बुलाया. आज तो बोल के जाऊंगा जो बोलना है. हमारा एजुकेशन सिस्टम गलतियां करना इनकरेज नहीं करता. हम पीनलाइज करते हैं गलतियों को, बहुत बुरी नजर से देखते हैं गलतियों को. वी आस्क फॉर परफेक्शन वेरी सून एंड इन वेरी हाई क्वांटिटीज, विच इज टू अ रोबोटिक. इसीलिए इंडियंस लाइक रोबोट्स आर वर्किंग इन द बिग टेक फर्म्स ऑफ द वर्ल्ड. और उनके जो सीईओज हैं वो टी शर्ट और जीन्स और स्नीकर्स पहन के आते हैं, मल्टी बिलियनियर्स हैं. हम जाके वहां पे यस सर. क्यों? We've been taught. Stay between the lines. Color between the lines. Drawing का टेस्ट है. वो टेस्ट क्या है? ड्राइंग का टेस्ट ये नहीं है बच्चे अपनी ये लो खाली कागज, ये लो क्रेयॉन्स, बनाओ क्या बना सकते हो. नहीं, ड्राइंग का टेस्ट है बेटा ये लो हमने तुम्हारे लिए टेम्पलेट बना दिया, ये लो कलर, वो पे लिख भी दिया रेड में रेड जाएगा, ग्रीन में ग्रीन जाएगा. थोड़ा सा बाहर गया फेल. इमेजिन करो लियोनार्डो डा विंची को और और बड़े पेंटर्स को, वैन गॉग को बोला जाता, पिकासो को, बड़े जैसे बोला गया वैसे करो अदरवाइज फेल. गलतियां गिर गिर कर तुझे संभलना, ये ठोकरें ही तुझे चलना सिखाएंगे. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. वेलकम फेलियर, वेलकम एम्बैरेसमेंट. दे गिव यू चांस टू करेक्ट योरसेल्फ.